Subscribe and click the bell icon for watching more video. कि आयोग की सिफारिशों से देश में बढ़ेगा बवाल। कानून आयोग की सिफारिशों से जो इस सरकार ने निश्चित रूप से प्रस्तावित की है, नहीं तो ये सिफारिश आती नहीं। आयोग की सिफारिशों से देश में बदलेगा बवाल, बढ़ेगा बवाल। अब कैसे कोई उठाएगा आवाज, कैसे कोई पूछेगा सवाल। आज ये राजद्रोह के कानून में उसके जरिए तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष के गला घोटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और जारा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सब ये सरकार इन सब चीजों में माहिर है। दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको जो 6 पहलू हैं मूल रूप से इस प्रस्ताव के, वो बताना चाहता हूं। मूल रूप से इसके बहुत ही घिनौने जो पहलू हैं, उसका नंबर 1 है ये जो अभी स्थापित राष्ट्रद्रोह का कानून है, उसको और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक और ज्यादा तकलीफ वाला, दर्दनाक बनाना चाहते हैं। और उसका एक तकनीक है कि जो नीचे दर्जे का दंड है उसको 3 साल से 7 साल करवा दिया गया है प्रस्ताव के रूप में। दूसरा, ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे अनभिज्ञ है पूरा देश। सरकार उच्चतम न्यायालय की 1 वर्ष पुरानी कार्रवाई से, उसमें विस्तृत कई ऑर्डर हुए हैं जिनको बारे में मैं कुछ कोट करूंगा आपको वापस अभी। ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसी प्रक्रियाओं के बाद जिसपे सीधा उच्चतम न्यायालय ने ये प्रकट किया अपना विश्वास और अपनी मंशा कि इस कानून को अब बंद किया जाए या इतना छोटा किया जाए, इतना कम प्रभावशाली किया जाए कि इसके कोई दांत न बचे। तीसरा, एक मजाकिया चीज की गई है जो 60 साल से न्यायपालिका का कानून था। केदारनाथ 1962 का निर्णय 60 साल पुराना है। जो कानून बनाया गया था न्यायपालिका द्वारा, उसको प्रस्तावित किया है कि उसको अब विधायिका द्वारा बना दिया जाए। बस ये संशोधन, ये इंप्रूवमेंट, ये सुधार बताया गया है 60 साल बाद। इसलिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि चूहा नहीं, मैं कहूंगा एक भयानक राक्षस निकला है। चौथा, कोई भी ऐसा सेफगार्ड, सुरक्षा चक्र नहीं दिया गया है कानून में जिससे कि उसके दुरुपयोग को कम हो, रोका जाए। और उसके दुरुपयोग के आंकड़े मैं अभी आपको देने वाला हूं 2014 के बाद। पांचवा, बड़ा स्पष्ट रूप से कॉलोनियल एक मानसिकता का संदेश दिया गया है कि हम उसी मानसिकता से शासक और प्रजा के बीच में दूरी रखेंगे और इस कानून द्वारा गणतंत्र की नींव को पर आक्रमण करेंगे, उखाड़ेंगे। क्योंकि गणतंत्र की नींव है स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष सोच, बोलचाल इत्यादि। और अंतिम बात ये बड़ा स्पष्ट है कि एक संदेश दिया गया है विशेष रूप से चुनाव के पहले कि हम इसका वैसे ही एक तरफा, एक पक्षपात से ओतप्रोत दुरुपयोग करेंगे, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय के ये आपने वाक्य याद दिला दूं आपको, क्योंकि संस्थापिक स्मृति को वापस जगाना आवश्यक है। इट विल बी अप्रोप्रिएट नॉट टू कंटिन्यू द यूसेज ऑफ द अफोर्सेड प्रोविजन ऑफ लॉ बाय द गवर्नमेंट्स। बल्कि इसको सुनकर असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जब असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया की स्टेज पहुंची थी तो कहा गया सरकार द्वारा कि अभी इसको नहीं सुनिए, हम इसको पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार का आपने परिणाम देखा है। आगे कहा उच्चतम न्यायालय ने, वी होप एंड एक्सपेक्ट दैट द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स विल रिस्ट्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, कंटिन्यूइंग एनी इन्वेस्टिगेशन और टेकिंग एनी कोएर्सिव मेजर्स बाय इन्वोकिंग 124A while the aforesaid provision is under consideration। तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, रोक दिया, इसका कानूनी मरण कर दिया था पिछले 1-1.5 साल से।
उसके बावजूद ये किया गया है। क्यों? क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है सरकार का 2014 के बाद। आंकड़े आपके समक्ष हैं। 2014 से 20 में लगभग 28 से 30% बढ़ोतरी हुई है इन केसेस में। लगभग 550 से ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं इस अल्प समय में, 8 साल में। 12 फाइल किए गए हैं पेंडेमिक के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स इत्यादि के मुद्दों पे। 21 केस गए हैं पत्रकारों के विरुद्ध। उसमें कोविड के मुद्दे शामिल हैं, हाथरस गैंगरेप के हैं, नागरिकता के हैं इत्यादि। 27 केसेस हैं सिटीजनशिप एक्ट और रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर के विषय में। हम जानते हैं कि करीब करीब उत्तर प्रदेश में 60% बेल याचिकाएं इस विषय में निरस्त होती हैं। 60%। कई दर्दनाक भयानक उदाहरण आए हैं। जनवरी 2021 में 3 सेडिशन केसेस फाइल किए गए कई लोगों के विरुद्ध में, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में। शशि थरूर के विरुद्ध, राजदीप सरदेसाई के विरुद्ध, मृणाल पांडे के विरुद्ध, कौमी आवाज के जफर आगा के विरुद्ध, परेश नाथ कारवा मैगजीन के विरुद्ध, अनंत नाथ, विनोद जोज, बाद में विनोद दुआ के विरुद्ध, एल्गार परिषद, सिर्फ विरोध, गणतांत्रिक विरोध करने के लिए, सिर्फ अपनी आवाज उठा के किसी चीज की निंदा करने के लिए। इस प्रकार के उदाहरण और बहुत हैं। लेकिन मूल जो प्रश्न उठता है, जिससे मैं अपनी बात अंत करूंगा, मूल प्रश्न 4-5 हैं। नंबर 1 कि क्या इस सरकार में हिम्मत, दम, धैर्य नहीं है कि वो इस कानून को हटा दे। इसके लिए अभियान हुआ है देश में। उच्चतम न्यायालय ने करीब करीब अपना मत रखा है। गणतंत्र में इसको हटाने की बात क्यों नहीं करती है वो? उल्टा उससे कहीं ज्यादा भयानक बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष आया है। दूसरा, 2014 के बाद बीजेपी के सरकारों में ये क्यों तिगुना, दुगुना, इतना ज्यादा इसका दुरुपयोग क्यों बढ़ा है? आंकड़े इतने क्यों बढ़े हैं? तीसरा, क्या ये आगामी राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में एक और टूल निकाला गया है? दुष्प्रभाव का, भय का, प्रताड़ना का, कंट्रोल फ्रीक का। चौथा, ये सिर्फ पक्षपाती रूप से विपक्ष के सेगमेंट्स के विरुद्ध क्यों इस्तेमाल और दुरुपयोग होता है? पांचवा, क्या ये कानून आयोग द्वारा एक तरीका निकाला गया है, एक घुमा फिरा के तरीका, एक ऊंचा नीचा तरीका, जिससे कि आप उच्चतम न्यायालय को एक प्रकार से अवहेलना करें और इस रूप से विपरीत करें, जो देश की मंशा है उसके विपरीत चलें। और अंत में कब ये कंट्रोल फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण की फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण से हर व्यक्ति, हर चीज, हर पत्ते को नियंत्रित करने वाली जो भावना है, वो सरकार कब ये कॉलोनियल मानसिकता को हटाएगी? ये हमारे प्रश्न हैं, ये हमारी निंदा है, ये हमारी भर्त्सना है आपके जरिए, क्योंकि ये एक काला दिवस है काले कानून के विषय में जो प्रस्तावित हुआ है। दिस इज ए टेरिबल, ट्रैजिक एंड ट्रेचरस डेवलपमेंट. It's quite astonishing how the Law Commission has recommended not only the retention of 124A, but making it harsher, more ferocious. As I said, it would be comic were it not tragic for the nation. The BJP, through its instrumentalities and agencies, is clearly using or intending to use sedition as a tool for subversing, subjugating and silencing dissent. Friends, let me give you the 5 or 6 elements in a nutshell, and you will get it in a note in para 10A where I have summarized the whole thing. And this is a little important for you to understand and appreciate.
and you means through you the nation. In a nutshell, friends, the Law Commission proposal, number 1, makes the existing law of sedition far more draconian and invasive, far more prejudicial by enhancing the lower end of the punishment from 3 to 7 years. Second, it clearly ignores the letter and, more importantly, the spirit of the Supreme Court proceedings of May and October last year, 2022, which specifically rendered the entire offence of sedition stillborn, clearly intended it to be inoperative pending its repeal or significant softening. It is astonishing how directly it is against the Supreme Court spirit. Third, the proposal purports to legislate or convert into legislation what has always been part of our judge-made law for 60 years. Kedarnath is 60 years ago, in 1962. Namely, खोदा पहाड़ निकला चूहा 60 साल बाद जो कानून में लिखा था उसको आप प्रस्तावित कर रहे हैं कि आज उसको विधायिका का कानून बना दे। उस वक्त लिखा गया था एक निर्णय वाले कानून में, उसी चीज को आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि विधायिका का कानून बना दें। Fourth, it has provided no additional safeguard, caveat, any limitation to prevent the abuse. And I'll give you some startling figures of abuse. Fifthly, it has sent a clear signal as to the colonial mindset of this government, a colonial mindset coupled with a signal sent to the nation that we intend to retain this draconian provision as a threat to you, as a threat upon you, as a threat against freedom of speech, expression, thought and action, which is the essence of democracy. And lastly, this government has obliquely declared its intent to continue to be selective and partisan in the misuse of this law against political dissent. Friends, what happened with the Supreme Court in May 11, 22 and later by the order of October 22 is very interesting, and I'll just remind you very quickly of a few quotations from that time. Both the petitioners and the Attorney General have pointed out instances when this law has been misused. This is what the court said in May 22. In the light of this, I quote now, "It will be appropriate not to continue the usage of the aforesaid provision of law by the governments," unquote. "We hope and expect that the state and central governments will refrain from registering any FIR, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking 124A while the aforesaid provision of law is under abeyance and consideration." And so on. So the clear object was that you will have either a repeal or at least significantly softening features. Why were these comments made? Why were these comments made, friends? Need I remind you, this judgment, this order or this set of proceedings in 2022 happened after, in a short span of 8 years, since 2014, the statistics were alarming. Statistics showed a 28%, almost 30% rise in sedition cases between 2014 and 20. 559 cases in this period as compared to 30% and less before that. Sedition cases were filed against those in the pandemic who raised issues of lack of ventilators, oxygen, etc., etc. 12 such cases were filed under 124A. 21 sedition cases were filed against journalists. Many have been arrested under this provision, including the context of COVID-19, farm laws, Hathras gang rape, citizenship.
So criticism of the government is this tool to be used selectively and partisanly. 27 sedition cases were filed against those who protested on the Citizenship Act and the National Register for Citizens. 8 were filed against those who were protesting in the context of farm laws. In Uttar Pradesh, 60% of bail applications at trial courts were rejected. And they all involved cases of protest, religious hate, or insults to national symbols. I need not remind you how a minority community baker, can we please? Baker, a profile, had to spend 3 months in jail before bail was granted on sedition issues. 3 sedition cases were filed in 3 BJP-ruled states in January 2021. They included, and I repeat, persons like Shashi Tharoor, Rajdeep Sardesai, Mrinal Pandey, Zafar Aga, Caravan's magazine editor, etc., etc. Vinod Dua faced it. Elgar Parishad faced it. We cannot forget this because institutional memory is short, so it is vital to remind you. And therefore, friends, I will condemn this. I will completely reject this on behalf of the Congress and ask the following questions as I end. 1. Why does this government not have the courage to repeal the sedition law? Despite the strong observations of the Supreme Court rendering it inoperative for the last over 1 year, with the clear understanding that it will be significantly softened to vanishing point or repealed. Question number 2. Why have these cases of sedition exploded during BJP regimes? The figures are there for you from 2014. Third, is this an initial step to create a fear psychosis before the upcoming elections, the general elections next year, and further elections at the state level? 4, why is this used partisanly, selectively, principally against opposition persons or those opposed in terms of having a different thinking and philosophy than the government view? How many BJP sympathizers have been booked under this law? 5th, is this nothing more than a circuitous route by the government, a circuitous circumvention to avoid the Supreme Court observations and to actually do the reverse, to make this law more draconian? And lastly, why does this government not change its control freak style of functioning? A control freak sarkar, why does it not change its colonial mindset, its hypocritical swearing against colonialism and doing exactly what is that mansikta? In a nutshell, the BJP now plans to become more draconian, drastic and deadly by misuse of a colonial era law.